हेलो हेलो। व्हाट्सअप। क्या हाल चाल। हेलो हेलो। सही है। चलो। अभी भाई मेरा प्लान है एनक्यू में शॉर्ट करने का। आई मीन ट्रिपल क्यू में। आ, आप जो कह रहे हो वो देखना पड़ेगा, मैंने वो देखा नहीं है। लेकिन एनक्यू आई एम प्रीटी श्योर ऑफ शॉर्टिंग दिस till this low gets taken out. We do have some available liquidity here as well. This looks like a very clean equal lows, very beautiful liquidity, very great trade. I am definitely executing this. We got a nice sweep. We start building a very nice order flow for now. तो प्लान इसमें शॉर्ट करने का रहेगा। दूसरा प्लान, आप गोल्ड में लॉन्ग्स का कह रहे हो राइट? भाई गोल्ड में मैं लॉन्ग्स तो नहीं देख रहा बिल्कुल भी। आई डोंट सी दिस लो होल्डिंग। आई डोंट थिंक लॉन्ग्स would actually be worth it. 120 तक भी नहीं भाई। I don't think it's gonna hold. Look at this, like it's so weak. Why would like you look for longs? It's so weak. Don't don't look for longs. Instead, plan shorts and expect this low to be taken out. This would be your first target. Next, your next target would be, honestly, I'm seeing all of this as a liquidity, and this is the available demand area. So eventually, I will be expecting ये है liquidity है, ये liquidity है. All of this is supposed to be taken out is what I feel. Now what prices do, we will just react on it, but we have a clarity that we are not supposed to look for longs. Instead we will continue to look for shorts. Okay. अच्छा मुझे ये बताओ, just an opinion, okay? If this camera or if this angle looks good, or it's not about the angle but it's about the clarity as well, or this looks good, like पता नहीं इसमें colors, I just need to do some adjustment with the colors, but which one looks good? This one, like this is second one, and this is, oh no, not this of course. Wait, कहाँ गया? Wait, नहीं भाई यहाँ पे भी चार्ट आ गया. Or this is my laptop camera. So this is the first one. This is the first one, and this is the second one. Which one looks good, first or second? Okay, we'll just stick to second one then. Thank you, thank you, thank you. पता नहीं क्यों इसमें थोड़ा सा ग्रीनिश ग्रीनिश सा लग रहा है. आई जस्ट नीड टू फिक्स फ्यू सेटिंग्स फॉर द कैमरा, बट या इट्स फाइन. The laptop camera more real. uh I mean this one is more real honestly. It's just that I need to make some corrections. I can just maybe switch it to auto and see if it, it's still fucking same I feel. Yeah. Fuck it. अभी मैंने ऑप्शन दी इसलिए तुम्हारे पास ऑप्शन, या बट आई थिंक सेकंड वन आल्सो लुक्स गुड. आई विल मेक सम चेंजेस. थैंक्स फॉर योर inputs. Love you guys. Now let's continue to look for shots boys. लो जाएगा ये भाई, लो जाएगा, लेकिन अपन को अभी शॉर्ट लेना है. टाइम इज 7:20. Thank God we haven't executed any single trade so far.
We waited patiently. That's great. Now we have clarity for two assets. First is gold. Gold is supposed to go down lower, and हमारा intentions plans सब कुछ है ये कि ये लो जाएगा और अपन ये शॉर्ट लेंगे, ठीक है। लेकिन अपन को चाहिए थोड़ा सा प्रीमियम में। अब ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइसेस यहाँ पे आए, फर्स्ट थिंग। नेक्स्टली ये भी ज़रूरी नहीं है कि नहीं आए, तो अपन अपना पॉसिबल बेट्स लेंगे, जैसे कि if prices reach within this supply and precisely if it hits this inefficiency area, अगर यहाँ आता है और अपन को कुछ मे बी स्मॉलर टाइम फ्रेम में कुछ शिफ्ट विफ्ट देखने मिले, मेरे को इसमें उतना ऑनेस्टली कन्विक्शन नहीं है। यहाँ आता है दैट वुड बी लाइक मोर चुम्मेश्वरी ट्रेड। I don't think there is any sort of lag because I am also playing my stream in just front of me, so just to read your chats. So I don't think there is any problem as such. Ding 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 ding. Sorry. 10 seconds. Wait, let me check. Wait, let me check. 1. Wait, let me check. 1. Almost 4 seconds. It's not 10 seconds. It's not 10 seconds. Oh, actually, it's not even. Oh, actually, it's not even. Oh, it's hardly 1-2 second, bro. That's fine. That is very normal. देखो, अपना प्लान ये है कि अपन करेंगे शॉर्ट्स। गोल्ड में शॉर्ट्स का इंटेंशन है अपना, और एनक्यू में शॉर्ट्स का इंटेंशन है अपना। अपना मनी मनी इसमें ज़्यादा सॉलिड जो इंटेंशन है वो गोल्ड का है। तो गोल्ड भाई, गोल्ड शॉर्ट लुक्स चुम्मेश्वर, तो गोल्ड अपन करेंगे शॉर्ट, ठीक है। यूरो में दिस डोंट रियली लुक्स लाइक इट्स रिएक्टिंग, so now I think this becomes the liquidity level. I'll just get rid of this and this low becomes a liquidity level now. So मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि भाई यहाँ से ये जाए नीचे और मेरा जो लिक्विडिटी लेवल है, जो कि ये लो, अगर ये लो नहीं मार्क करना तो ये लो भी अपन मार्क कर सकते हैं। दीज आर माई लिक्विडिटी पॉइंट्स एंड आई वुड बी एक्सपेक्टिंग दीज लोस टू बी टेकन आउट, ठीक है। यूरो में भी बायस प्लान शॉर्ट का ही है। अभी अपन को ट्रैक करने मल्टीपल एसेट्स, तो मैं अपने हिसाब से मेरे चार्ट्स पे लगाता हूँ। यूरो में भी शॉर्ट करना है। Gold is also supposed to go, bitches. Oh, gold also reacting from the nicest inefficiency area that we just marked. I mean, like, we missed that way. But yeah, almost reacting from the inefficiency, almost there. Not really there, but yeah, almost there. Now it don't make sense for us to just enter from the current area, keeping that crazy huge big of a stop loss. Of course, that's not logical. तो अपन वेट करेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ कहीं आता है तो मैं सोचूंगा कि भाई डायरेक्टली रिस्क एंट्री के साथ घुस के इतना बढ़ा दो नहीं भाई, फिर मैं वेट करूंगा यहाँ पे भी। यहाँ पे अगर यहाँ आता है आई विल थिंक ऑफ एंटरिंग विद द रिस्क एंट्री, बट उतना ऊपर विल सी। But the intentions and the plan is to continue to look for shorts. The first target level is definitely this one. This is supposed to be taken out. Right now we can see there is a shift in our order flow. We have swept liquidity above this high and then we have taken out this low as well. We have liquidated this low, but that low will eventually go and sustain below. So we can just take more confident and comfortable shots.
we are creating a nice order flow, so I would not really hesitate to enter shorts. So I'm more inclined and biased towards entering in shorts in gold. Same in euro. Euro also I am looking for shorts. That is the plan. And hmm. AUD USD में मोस्ट लाइकली एक स्विंग ट्रेड बन सकता है, ये मैं ऑब्जर्वेशन के लिए रखूंगा, बट ये सॉर्ट ऑफ स्विंग ट्रेड की तरफ का इंडिकेशन है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ वीकनेस हियर. प्राइस हैव फेल्ड मल्टीपल टाइम्स टू पुश अप हायर, सो आई जेन्युइनली थिंक दैट वी हैव सम नाइस लिक्विडिटी लेवल्स अवेलेबल नीचे की तरफ. और अगर मुझे स्विंग ट्रेड लेना हो तो आई वुड नॉट रियली केयर मच, और मैं जहाँ ट्रेड कर रहा है वहीं पे ट्रेड करके इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा लूँ. और क्योंकि मुझे पता है मेरा टारगेट नीचे की तरफ होगा ये 1:6. This is quite possible because structurally also charts and prices are screaming out the same thing. So the swing trade looks really solid. The slow is supposed to go daily, weekly. You can clearly see that kind of holding bearish. Weekly mein you can see that it has tried but failed miserably. Here also it's failing miserably. That means this and this low is a weak low. If not this, at least this low is a weak low. So we are again reacting from something within the premium area. यानी ये ऊपर गया यहाँ के सप्लाई से, इसने वापस रिजेक्शन लेना चालू किया. इट्स एक्चुअली ब्यूटिफुल कि यहाँ से हमें शॉट्स देखने मिल सकते हैं, राइट. तो मैं देखूंगा अगर मुझे ये प्रीमियम एरिया में मिला और थोड़ा ऊपर आता है, ये मे बी ये सप्लाई को टेस्ट करने, मैं शायद एक स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूँ, ठीक है. और बाकी तुम्हें अभी करना है, अभी भी दिस इज अ गुड एरिया. You can just try doing that with maybe 0.01 because it would be your first time doing that, like holding for too long, something like that. So yeah, we'll just wait and see. Gold pushing up higher. I have an eye on a gold. Euro also retracing. The 15 minutes candle has closed here. The 1 hour candle has closed below. And right now, what I feel is we are like printing a new 1H candle. This can potentially be a retracement one, and maybe it will just create a long fucking wick. If you see, your gold is reacting from the inefficient area that we just marked. I would really like, we have dropped nice liquidity here. अगर मैं नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड करता, मैं शायद यहाँ पे एंट्री करके ये स्टॉप लॉस रख के ये टारगेट करता, अगर मैं नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड करता तो. बट मैं नहीं करता ना, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वेट करूँगा. बट अगर मैं नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड करता, मैं पक्का ये एग्जीक्यूट करता, पक्का. बिकॉज मेरे को पता है प्रोटेक्टेड यहाँ कहीं है, प्रोटेक्टेड हाई, लेकिन ये जाने के लिए मोमेंटम में यहाँ से भी जा सकता है. तो या और इवेंचुअली ये लो हम सोच रहे हैं जाने का, तो नेगेटिव को पॉजिटिव या फिर 1:1 भी कर सकते हैं. बट अभी अपन वेट करेंगे. वी आर नॉट इन अ रश टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स. स्टिल न्यूयॉर्क होना, ओपन होना बाकी है, 8 बजे होगा, अपने पास काफ़ी टाइम है. कोई नई मैसेज नहीं आए. व्हाट्स अप पीपल. ओ US 100 बॉयज भाई शॉर्ट है इसका भी प्लान, क्योंकि दिस आल्सो रिएक्टिंग फ्रॉम नाइस सप्लाई एरिया
In 4H, we are forming lower highs and lower lows. And even after reacting from this demand, it has never taken out the structural high and still continue to fail and take out this low. So right now we are reacting from the premium area. We start getting immediate structural shifts. We have seen 15-minute structural shift immediate. Major 15-minute structural shift is also there. At least the low is breached. So it is throwing intentions at us that it has to push down lower. So most probably we will plan trade in that specific directions, like shorts की तरफ. कोल्ड बहन का जा रहा है. जो अपन ने एरिया मार्क किया था इनएफिशिएंसी का, वही से जा रहा है मस्त लिक्विडिटी हैंड करके. बट यही है, इट्स वे टू नीचे. अभी अगर प्रीमियम में आता है कंफर्मेशन के साथ, शॉर्ट करेंगे. आई एंटर्ड शॉर्ट विद स्मॉल रिस्क. आई मीन लाइक it's good only, but if you are risking small, just keep this as a stop loss, and if it retraces up higher, you can add more, or you can exit your first position. You can exit your first position and then enter somewhere over here after a confirmation. This is good. This can work. Okay, it's not that it's not that great as I was. No, it's a good trade, but it's just that it's way for my liking. Like it's way too in the discounted area, so I don't really want that. भाई यूरो से भी इंटेंशंस आ रहे हैं अपने कि यूरो भी नीचे जाएगा, है ना. ये अपना बेरिश ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू करेगा. तो अगर यूरो बेरिश ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू करेगा तो अल्टीमेट टारगेट अपना ये है. लेकिन अल्टीमेट टारगेट को ना कंसिडर करते हुए अगर हम इमीडिएट भी देखें तो हमारा इमीडिएट ऑर्डर फ्लो तो शिफ्ट हो चुका है बेरिश, और 15 मिनट्स का इमीडिएट स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी होल्ड कर रहा है. तो उस हिसाब से हमारा ये और अल्टीमेटली ये टारगेट होगा. दैट इज व्हाट आई एम सीइंग एट.
guys, enter shots in euro. I'm keeping like around 11 pips as my stop loss. I know it's slightly wide, but hold your trade till this. It would be a 1:4 risk reward trade. It's not like, it is good, okay, but जब अभी प्राइजेस ने ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और ये ऑर्डर फ्लो होल्ड करता है तो डेफिनेटली वी विल बी सीइंग दीज लोज गेटिंग स्मैश्ड. बट अगर यहाँ से डिमांड, अगर लाइक इफ देयर इज लैक ऑफ लिक्विडिटी, प्राइस विल ट्राई टू पुश अप, देन ब्रेक स्ट्रक्चर एंड देन पुश डाउन लोअर. दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबल सिनेरियो दैट आई एम सीइंग राइट नाउ. तो अगर आपको 0.5% रिस्क के साथ एंट्री लेनी है, you can go for it, right? But it's actually a decent one because we know that this low is eventually supposed to go, and the area from where prices are reacting, it's not going to hold strong. It will definitely not hold. या तो ये कर सकते हो कि थोड़ा वेट करके अगर प्राइसेस यहाँ आता है अराउंड दिस एरिया, यू कैन एंटर. बट अगर तुम करंट एरिया में भी एंट्री ले रहे हो, it's not बहुत ज़्यादा दूर, maybe 5-7 pips दूर. It's up to you. You can just give room as per that. अभी फिलहाल I am planning to execute. I have not really executed yet. Maybe you will just get chance in gold as well. So I will be waiting. और रही बात यहाँ पे एंट्री लेने की, तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट करके, मैं थोड़ा सा लेट एंट्री ले लूँगा बट जल्दी नहीं कूदूंगा. आई विल जस्ट वेट एंड लाइक हैव दैट कंफर्मेशन दैट येस इट इज सपोज टू गो. बट आई एम क्वाइट कन्विंस्ड विथ यूरो यूएसडी दैट इट इज सपोज टू गो. It is supposed to go down. Go down on whom? I don't know, but yeah, it is supposed to go. जर्मन इंडेक्स क्या कर रहा है? जर्मन इंडेक्स भी जा रहा है भाई. This piece of shit is also going down lower. We also discussed like this way back that it has to go, and look at the, like, now it's clearly showing intentions that it has to go. So the best way is to monetize it. How are we gonna do that? We're not sure about it yet, but if we're gonna do that, yes, we will. बाकी अगर गोल्ड में तुमने नहीं, यूरो में नहीं लिया, आई एम सॉर्ट ऑफ वेटिंग, बट अगर तुम्हें लेना है तो भाई 11 पिप के साथ तुम ले सकते हो. अगर मैं ले लूँ, it would be waiting for gold और US 100. मैं चाहता तो हूँ ये ऊपर आए, लेकिन मुझे पता है एक वक्त ऊपर नहीं आएगा. So instead I will wait for NY to open and see where NY is pushing the prices. As
as per that will plan and execute my positions. But I'm seeing this low to be a definite one that it has to push down low. So I'll be mostly planning trades around it, and I'm quite convinced that it is supposed to go down. तो भाई मैं तो उसी डायरेक्शन में लेते जाऊंगा ट्रेड. I mean, not really gambling, but yeah, will be executing trades in that selling wala direction. Mhm. Euro, gold, gold, euro. We are getting some rejection there, which is your range low को ब्रेक करके वापस रिट्रेस करके लिक्विडिटी हंट करके वापस ब्रेक हुआ है. वो सप्लाई से हमें रिएक्शन आ रहा है. रिएक्शन पे ट्रस्ट ना करते हुए हम थोड़ा सा और वेट करना चाहेंगे, बिकॉज अभी भी हमारा स्टॉप लॉस 150 पिप का बन रहा है, और 150 पिप का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 400 पिप का. लाइक रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:2.3 रहेगा ना अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं. तो करते हैं स्टॉप लॉस 150 पिप का. नहीं भाई 1:1.5. हाँ नहीं 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 2.3 होगा. वाह निशांत वाह. रफली अराउंड वही 2.5 के आसपास. Will be waiting for some more conviction, but यूरो टारगेट भाई टारगेट तो काफ़ी नीचे है. Like we can just expect these sort of equal lows to be taken out, like 15415, 15415, 15415, 15415. You're still waiting. Projection looks good. As I said, like maybe we'll just enter a bit late, but with confirmation.
once this low goes, then I don't think these lows has anything or any reason for them to hold. So we'll be planning shorts then. This looks good. The range low is kind of missed, but kind of tested as well. If we just see it this way, this range low, yes, it is tested. So it does make sense. This low is supposed to go. Let's fucking go. We start seeing convictions in the selling directions. अगर यूरो में किसी ने नहीं लिया तो प्लीज एक 12 पिप के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी एंट्री ले सकते हो तुम. इफ यू वांट टू एंटर यू कैन इन दिस ट्रेड. 12 पिप का स्टॉप लॉस लेके लाइक यू आर गेटिंग लाइक रफली अराउंड 50 पिप्स का टारगेट. मे बी रिस्क हाफ नहीं तो 1% विल ऑल्सो बी फाइन. I'm still waiting for some more confirmation here. US 100 trade. Be ready to enter around this area. Your target would be at least 1:3.5. Once gold reach within this area, you can plan shots. Or this would be the only trade that I would suggest to execute in supply. बहन करो ऐसे ही मत जाओ भाई, ऐसे ही मत जाओ भाई, अम्मा बहन कर दूंगा भाई. fuck bitch go. थोड़ा ऊपर जाओ मेरे भाई, थोड़ा. गोल्ड ये US 100 अगर इधर आ जाए तो मजे मजे आ जाए. बट ये यहाँ से भी गिरने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं.
ये लो जाना पक्का है। अपना डायरेक्शन एंटिसिपेशन आज 100% काम करने वाला है। बस भाई भगवान हमें एंट्री दे दे। बस एंट्री मिल जाए भाई, एंट्री मिल जाए भाई। US 100 में भी भाई पक्के शॉट्स मिल रहे हैं अपन को, पक्के। अच्छा पापड़ पक्का पापड़, अच्छा पापड़। अरे ट्रिपल क्यों इधर, इधर नहीं, अरे पापड़ पक्का, अच्छा पापड़। उल्लू पीछे में हटा। ये कर। भाई टेस्ला में भी और नीचे रूम है ऊपर जाने का, ऐसा मेरे को तो लग रहा है भाई, क्योंकि ये रेंज हाई टेस्ट नहीं हुआ तो टेस्ला भी नीचे जाएगा। US 100 भी नीचे ही जाएगा आज, लिख के लो। बस ये है भाई, वो एंट्री दे दे। और अपने पास कितने हैं, 5 मिनट है। 4 मिनट है अभी। 4 मिनट में अगर ये ऊपर स्वीप देता है ना भाई, जो मज़ा आएगा ना। VPN कनेक्ट। क्या? या भाई, तो भाई आज तो शॉर्ट करेंगे भाई, आज तो करेंगे अपन शॉर्ट। डॉलर है। 0835। US 100, sorry, US 30. US 30, bro. It would be also the same. Like we are looking for shots. US 30 as well. I don't really look at US 30, but the bias and intention is to look for shots there too. You're also with shots only. It's just that I wanted a retracement, but looks like price are not really willing to do that. But I don't really want to jump in directly. So I would instead wait and see for a liquidity hunt and sweeps, and then we'll continue to plan shots. If it happens to maybe pump down and then taking demand and push up, most probably something within this or this area, I would absolutely love to smash shots towards these lows. This is my target. This is what I'm expecting out of US 100. So same way you can just correlate it with US 32.
No, it is not yet at our entry point. Yeah, US 100. I got a $1 move, just super small scalp. Uh, okay, wait, 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 wait. Don't enter, don't enter, don't enter, don't enter. Don't enter yet. Don't enter yet. Don't enter yet. Okay, you can enter shots now. You can enter shots now. You can keep roughly around by same 57-ish pips as your stop loss. I've entered shots and keeping roughly around 200 pips as my target. I think this immediate one is supposed to go. So as per that, I'm planning and executing things. Let's see. I am continuing to hold. I have two active position, one in euro and another one in gold. I'm still 464076. Yeah, here. It's inefficient. I'm still in. I'm not really exited the position yet. Once it breach, I will exit. Okay, I have exited. मेरा यूरो का ट्रेड चल रहा है and it's in positive. This gold moved higher. Now I think I will just wait.
Triple Q. Let's see how it reacts of the supply. But I think I'll just wait for a 1 minute structural shift before entering, because then it can just continue to bump up. And if it does that, I'll just call it a day and not really trade. Euro wala trade, if you have executed, good, because it's going. This, if you haven't executed, you can. Euro, उसमें वही 0.5% के आसपास या फिर 1%, depends. You can risk. Gold, it's in a range now. अगर यहाँ से सेलिंग आती है और स्ट्रक्चरल शिफ्ट होता है तो ही मैं इंटरेस्टेड रहूँगा, वरना मैं छोड़ दूंगा. मैं नहीं हाथ लगाऊंगा. US 100 में जैसे हम चाह रहे थे वैसे हो रही है चीज़ें. सो दिस ट्रेड इज रनिंग and we are thinking of executing our positions in US 100 as well, and the way we discussed, like a push down, a retracement, and then most probably from this area we need a structural shift. If it failed to shift its structure, we are not entering, because then it can just pump up high, right? अभी यहाँ की जो inefficiency बची थी, price have filled that, price have tested this range low, and right now the flow and structure is holding bullish, and it's trying to push the prices higher up. So उस way से most probably we'll see how it moves, how it reacts from the supply, और उसके बाद ही हम कुछ प्लान करेंगे. अगर हमें यहाँ से स्ट्रक्चरल ऑर्डर फ्लो दिख रहा है कि यहाँ से होल्ड कर रहा है बुलिश, तो विल जस्ट प्लान लॉन्ग्स, एंड if nothing works like that, then we are not even interested. अभी गोल्ड शायद मैं अवॉइड करना चाहूँगा. यूरो में मेरी पोजीशन है, मैं उसे ही रन होने दूंगा. और US 100 जो करंट एरिया से रिएक्ट कर रहा है, आई एम इंटरेस्टेड इन सेलिंग फ्रॉम देयर, बट आई नीड सम मोर कन्विक्शन. AUD USD भाई, अगर किसी को करना है तो तुम कर सकते हो शॉर्ट्स. AUD USD में एज आई सेड, लाइक यहाँ पे आए तो आ गया है, यहाँ पे ले लो short. Like if you want, like it would be a sort of swing trade that you can plan to execute, and we'll keep a very close eye on daily basis for this. Roughly around 1:7 is what we can get from this, and yeah, you can definitely plan to execute on this one, maybe risking 1% or so, or 0.5%, but you can definitely look at this trade as a good potential one. बाकी टेस्ला क्या था? यूरो इट इज भाई. यूरो भाई, बीवी बीवी होती है भाई. गोल्ड हगा तो हगा भाई, तो क्या बीबी ने पैसे बना के दिए नहीं है, देगी बीबी पे पैसे बना के देगी. अभी right now the area from where we are reacting in gold, that is our area of interest as well. We have swept liquidity and we are reacting from like almost the premium area if price has to sustain this. So maybe we'll just try to take another bet here, just to see how it goes, because we are currently reacting of this inefficiency that was left here. Okay, if like instead of inefficiency, we would say we are actually reacting of a supply area, which was your 15 minutes, or you can also mark it as a 5 minutes buy to sell price action. If this 5 minutes candle try to close bearish, I would be more than happy to just jump in shots.
more 3-4 minutes for this specific candle to close. बट स्मॉलर टाइम फ्रेम लग रहा है कि अभी ये एग्रेशन दिखाने वाला है बेरिश की तरफ. ठीक है, तो न्यूज़ अभी कोई नहीं है से looks like it can dominate towards selling. तो सोच रहा हूँ, let's see how this 5 minutes candle goes. Still have 3 minutes left. Selling looks quite good from here. But can't really just rely and enter based on this. This is good. To sell. Hello. तो सेशन में था, कर तो दिला थोड़ा बात. चल बाय. There's no conviction for shots. That's great. We actually waited. Like, Guru. Hey, यूरो हाय. बीबी बीबी दे रही है अपना साथ. भाई गोल्ड में देखते हैं, बाकी अभी ऑर्डर फ्लो बने और इसको ब्रेक कर दे तो मैं आई एम सोल्ड. सोल्ड टू एंटर शॉट्स, बट ऐसे नहीं. US 100 में भी देयर इज नथिंग येट. We need a order flow to build. If it continue to hold bullish, then we will look for longs. But if it starts showing weakness and if it starts showing intentions towards selling, we'll continue. होता है भाई, जब दिन खराब चल रहे हो तो ऐसा ही होता है. कोई नहीं, वेट करो, मिलेगी. Hello, hello, Priyanshu. Yes, Euro looks good now.
Gold is also aligning. It's trying to align, but it's sort of struggling. Let's see how this 5 minutes candle flows. Because it's showing, it's like intentions are coming in. Intentions are coming in. Thing, man. Like it's just fucking around. Let's avoid gold for now. US 100 trying to push up, so no conviction in entering there. Yeah, it's weak only, but it's just like it ranging. So you can't really say what's gonna happen next. So instead you wait for some clearer moves and then you plan entries. That would make a lot of sense rather than just entering SAE. There's a lot of weakness and it looks really good as well. Like intentions of it going down definitely are there, but weird as price action. इसका मन मुन तो है भाई ऊपर जा, सॉरी नीचे जाने का. This man is crazy.
US 100 is holding quite strong. So this shows that it has intentions of moving up higher and eventually taking out these highs. Because if this supply fails, then ये next available target है. So उसी तरह का bet करना पड़ेगा फिर, because अभी फिलहाल the way it's holding, it looks quite aggressive towards buying. Priyanshu, yes, I do have. Yes, we were waiting for gold to show weakness, but the way gold charts are printing, it is not really showing that weakness. So yeah, not interested.
Gold finally showing some signs of weakness. Hey folks, I am planning to enter longs now in gold. I mean shorts, not longs. अगर मैंने longs बोला होगा तो बिकॉज अभी लग रहा है ये होल्ड करेगा, बट अगर इसमें कोई स्ट्रक्चरल ब्रेक मिल जाए ना, ये लो निकल जाए और मज़े आ जाएंगे. बट आई थिंक दैट वुड स्लाइटली लेट, या तो ब्रेकआउट चेज करना पड़ेगा या समथिंग लाइक दैट. We'll see how it goes, how it builds up further. Expert GLD. ओल्ड बेंच बना रहा है भाई. वापस बाइंग, वापस सेलिंग, वापस बाइंग, वापस सेलिंग. सो इसको अपन हाथ नहीं लगाते आज. It's quite possible, but this trade only looks good. Nextly, अगर हम year standard देखें, FOREX wise it looks like okay, maybe buying can hold and sustain, and we need to continue to hold that. But it all depends on how smaller time frame order flow builds. Oh. uh,
Now from here, I would say like we will just wait. I'll wait and see where it goes because I'm not really sure yet. But now we have swept liquidity above this high. We are almost reacting from the premium area. Overall, forex structure looks and holds bearish. Immediate structure. So I might just look for shots because I do have this as available liquidity and I would be expecting price to fill this inefficiency and come within this range है. ये एक possible scenario है, बाकी देखा जाएगा. गोल्ड की माँ की जय. गोल्ड मेरे हिसाब से वो वो जाना चाहिए नीचे just based on 1h time frame and other scenarios. But the way it's building, it's fucking up. See, this is why I said wait. It's fucking bitch. It's bitchy bitchy nature चल रहा है भाई उसका. मूड स्विंग्स पे है गोल्ड. आई कांट मार देगा भाई गोल्ड. मत हाथ लगाओ अभी. है ना उसका मूड स्विंग चल रहा है अभी. मत हाथ लगाओ मेरे हिसाब से. भाई कुछ भी वियर्ड सा कर रहा है भाई और क्रेजी कर रहा है. अभी देखो यहाँ से मे भी ये जोरदार नीचे गिरे पॉसिबल है बट इट्स फकिंग वियर्ड प्राइस. डोंट जस्ट लुक एट इट मैन. फोमो होगा. फोमो में कुछ गलत कर बैठोगे. ये चल भी सकता है ठीक है बट सी माय बायस एंड इंटेंशंस इज बेरिश ओनली बट द वे इट्स मूविंग मन नहीं कर रहा मेरा एंट्री भी लेने का और ना ही देखने का. ये चल गया तो चल गया बट मुझे नहीं लेनी एंट्री इसमें. अब वैसा वाला सिनारियो है. इट्स एक्टिंग वियर्ड ऑनेस्टली. द वे इट्स मूविंग it's weird. It's weird to me. So I'm not really looking forward to enter any trade. If you want, मैं बता सकता हूँ like you can enter from the current area as well. Just keep this as your stop loss. But it's quite possible कि तुम्हें एक immediate move देखने मिले 130 240 पिप का. भाई जिनको घुसना है यहाँ घुस जाओ. लाइक अगर तुम्हारा एपेटाइट है तो 60 मे बी क्लोज टू 60 पिप्स एज योर स्टॉप लॉस. अगर घुसना है तो मैं नहीं घुस रहा ठीक है. मैं नहीं घुस रहा. आप पे है. इफ़ यू वांट टू एंटर यू कैन. Keeping 60 pips as your stop loss, considering this as your entry. Current trading price. अगर लेनी है 0.1 और 0.5% रिस्क के साथ तुम ले सकते हो
बट मैं नहीं ले रहा क्योंकि मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है बेस्ड ऑन आई एम फाइन विथ मिसिंग आउट ऑन ट्रेड्स बट दिस इज मेसी फॉर मी एंड आई एम नॉट रियली फीलिंग कंफर्टेबल ट्रेडिंग इन दिस. So I am personally avoiding, and it can hit the TP, but I'm fine with not really being in the trade. I'm fine with it. So मैं नहीं ले रहा entry, but this trade can work out and you can definitely execute on this one. ठीक है, you can execute this trade. Your first TP would be around this area, and eventually we can expect this to get hit as well. US 100 में शॉर्ट्स बन सकता है. Anyone took shots in gold 0.5 0.1 0.2 कुछ भी रिस्क के साथ. It has moved and it will eventually move till this 400 pips का target. US 100 अगर हम देखें pitch, the slow is supposed to go now. Oh great, बढ़िया. It was good one. I mean it is a good one.
भाई गोल्ड की एंट्री जिन जिन लोगों ने नहीं ली है, just be ready to execute now. It has clearly shown conviction, and I will also plan to enter. Just calculating my risk. अरे भाई नहीं भाई, sell 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 sell. हाँ ये तो जाना ही है, कुछ आना है। I've entered shots in gold. I am like giving roughly around bigger stop loss. I have entered with small quantities, targeting 1 as to 2.1 as to 2.14. If it retrace up higher something within this, I'll plan to add slightly more, but I have entered right here and I'm targeting 1 as to 2 on this one. I have entered. अकाउंट में और ये ऊपर आता है, आई एम प्लानिंग टू ऐड मोर. 4032. Bro, here definitely it's good, but in one day you can't really expect. And my trade is mostly intraday. So I will just close my trade before the night's end. So that's the reason I'm just targeting 1 as to 2, because I know this can hit. But this I'm not really sure कि ये आज ही hit हुआ क्या. अगर volatility है तो hold करूंगा, नहीं है volatility तो exit कर दूंगा. अभी इसने कंसोलिडेट किया है तो फटना तो आइडियली चाहिए, बट अभी जस्ट बीइंग कंजर्वेटिव एंड एक्टिंग कंजर्वेटिव, आई एम कीपिंग 1:2 एज माय minimum target that I am expecting of this trade. And as I said, not this area but और थोड़ा ऊपर यहाँ आता है तो I will be adding more. It's almost there only pitch. I'll take a position. Or okay, add your positions here. I have added just right here. I'm keeping this as a stop loss, like roughly around 50, and this would actually be a crazy, nice, sexy, whatever you call it, vola trade. Overall, the risk is like one, slightly over one. Not like risking my home and trying to go bankrupt, nothing of that sort. Just a normal one, like around 1% risk combined in both of these two trades.
Folks, if you want to enter shorts, you can enter shorts in US 100, and your target would be this low right here. Eventually it's gonna hit this, but yeah, you can go for it. Everyone have entered in gold. Those people who are in, you guys have entered in gold.
Can I have considerably decent position here? I mean, like मेरा गोल्ड का तो नहीं मैंने लिया अभी। एक मिनट। And, 14 भाई गोल्ड का है अभी भी। ट्रिपल क्यू यहाँ से यहाँ तक क्रेजी। ओके। फंड हमारा गोल्ड। आई मीन US 100 US 100। भाई अगर ये हाई ब्रेक कर दिया आई एम एग्जिटिंग एंड क्लोजिंग इट फॉर द डे विद द L की चूड़िया। हर कोई धोखा दे रहा है भाई आज। मैंने कर लिया एग्जिट। हर कोई गणमेरे की तरह एक्ट कर रहा है।
6161612.04. भाई मैं जा रहा हूँ आज बंद करने भैंसो सब। आज के लिए बस इतना ही। मैंने एक छोटी सी पोजीशन ली है इसमें, लाइक इसमें नहीं, मैंने US 100 की एक रनिंग पोजीशन है मेरी, और मैंने और एक यहाँ पे ऐड करी है। चलिए तो चांद तक नहीं तो रात तक, वो वाला सीन मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट आई एम एक्चुअली होल्डिंग दिस ट्रेड US 100 वाली, बिकॉज आई डू हैव सम कन्विक्शन कि ये वर्कआउट हो सकती है, जस्ट बेस्ड ऑन द हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चरल order flow and the way it's building up. So I'm just like having decent amount of position in the first. I added some more. It was of the conviction I have in this trade. I don't know why, but yeah, I just added because like it's logical, man. Like structural wise, it's forming lower highs, lower lows, and we are targeting a new low. वैसे अगर प्रियांशु यहाँ पे है, मुझे ये बोलना था, एक्चुअली नहीं बोल सकता मैं। The gold entry has made, हाँ बोला, मुझे समझ नहीं आया भाई। गोल्ड की माँ की, भाई बड़ा ही छूतिया चार्ट है भाई। गोल्ड गया गंड मराने। US 100 का मैं जो लिया हूँ पोजीशन, आई विल जस्ट मॉनिटर दैट, एंड दिस लाइक देयर नो मोर एग्जीक्यूशंस फॉर द डे, ओनली पार्ट इज मैनेजिंग। अगर ये ट्रेड चला तो चला, नहीं तो मैं बंद करके सो जाऊंगा खाना खा के। ऑफ कोर्स खाना इंपॉर्टेंट है भाई, खाना मिस नहीं कर सकते, खाना इंपॉर्टेंट है।
भाई मैं तो होल्ड कर रहा हूँ ये ट्रेड, आज तो होल्ड करेंगे भाई, आज तो ये ट्रेड होल्ड करेंगे। ये लग रहा है भाई ऑर्गेजम देगा ये। हाँ बातें कर रहा। हाँ भाई। इसमें मैंने उनसे पूछा कि क्या ये टॉपिक्स आपको सही लग रहे हैं, वो कहते हैं कि सब बेस्ट है ऐसा कंटेंट लिखना जिससे लड़के थ्रिप्स हो जाए। एंड देन ये है कुछ पेमेंट प्रूफ्स, ये है स्किल्सिया का रीडर्स ग्रुप जिसका मैं अभी तक पार्ट हूँ। एंड इसमें मैं और मेरे कलीग्स बहुत एक्टिव। इन सब के बाद मेरे पास फाउंडर के लिए सिर्फ एक ही चीज है। एंड आई अंडरस्टैंड इसमें इनकी इतनी गलती नहीं होगी बिकॉज जितनी
जितनी लिमिटेड इंफॉर्मेशन इनके पास थी उसी के बेसिस पे इन्होंने वीडियो बनाई। पहले मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो ना बनाऊं बिकॉज राइट नाउ आई डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सीज। मैं कॉलेज फोर्थ ईयर में एंड मैनेजिंग वर्क विद माय स्टडीज इज सुपर डिफिकल्ट। बट देन आई रियलाइज कि अगर सैम भाई को कुछ डाउट थे तो ही कुड हैव आस्क्ड मी पर्सनली, बट ही चोज टू मेक अ वीडियो एंड उसके रिस्पॉन्स में मेरा वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। आई एम ओनली मेकिंग दिस वीडियो फॉर माय करंट एंड फ्यूचर क्लाइंट्स सो दैट उनके मन में कोई भी डाउट्स ना रहे। नॉट अ सिंगल परसेंट हेट टुवर्ड्स सैयद। What are the real green flags in a credit card? Simple rewards. Single percent hate towards Syed and the founder because my creators and entrepreneurs को बहुत respect करता हूँ as it's not easy to become. Tesla, Tesla, Tesla is holding quite bullish. ये एक हीरो ही है जो अच्छे बच्चे की तरह चल रहा है। गोल्ड तो गंड मेरे साथ चल रहा है, ठीक है। गोल्ड गंड मेरे साथ चल रहा है। US 100 ये तो बुरा नहीं है, बट लग तो रहा है कि ये क्या भाई करेगा कुछ पता नहीं। Weird. So let's see, and fuck it, I'm closing it for the day. US 100, I will mostly allow it to run. My stop loss are placed, but I am walking out of the screen. ये मैंने यहाँ पे stop loss fix कर लिया है. I have calculated on my the funded account and I have measured it and I have placed stop loss, hard stop loss here. So if I walk out, that should not be a problem. So I'm planning to call it a day because euro जो चल रहा है वो चल रहा है. AUD USD is what the one that I have asked कि अगर लेनी है तो ले लो. वो बस याद रखना, यूरो होल्डिंग गोल्ड SL. इसने बस गांड मारी और कुछ नहीं किया भाई. इट जस्ट लाइक मेसिंग अराउंड और कुछ नहीं, तो हक दिया भाई है. और US 100 में पोजीशन रनिंग है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. एंड yeah, that was about it. I'll be seeing you all tomorrow morning. Rest. We'll see how things goes. So
Bye, take care, and I'll see you all tomorrow. Yeah, देखिए क्या चार्ज है तुम्हारा. I've not really opened it yet. Yeah, it's too bad. Friend मारा बहन चोद कोई. मिलते हैं फिर. चलो ठीक है. बाय बाय. Have a good night. See you tomorrow.